good morning to all my dear students. Hope you all are fine and safe at home. I think you all have enjoyed your kite festival. Now, dear children, it's time to get back to our studies after a short break. Today, we will be starting our English lesson in government textbook. In the second sem, we have not done any lesson. So today we'll be starting with a new lesson in the government. All of you will open your textbooks on page number 58. It is your unit 7. The Brave Little Kite is the name of the lesson. So first of all, what you have to do is you have to write sem 2, today's date and classwork. Now this is your activity 1. You all know that this book is completely activity based. So first we are going to see the first activity. Here you can see the pictures. There are 4 pictures are there in the sky. This is an aeroplane, balloon, kite and bird. Now what is common in all the 4 pictures is that everything, all the 4 things can fly in the sky. मतलब ये सारी चीज़ें आकाश में उड़ सकती है. ये चीज़ें इन 4 pictures में common है. बर्ड भी उड़ सकती है, पतंग भी उड़ाते हैं, बलून भी उड़ता है और एरोप्लेन भी आकाश में उड़ता है. सो ऑल द 4 थिंग्स कैन फ्लाई इन द स्काई. Now here the first question is, what is the common feature of in the 4 picture? In all the 4 pictures, aeroplane, balloons, birds and kites can fly in the sky. Now dear children, you know that aeroplanes है, तो ये aeroplanes का, how this aeroplane was invented, when one of them saw the bird flying like this, तो उसको ऐसे माइंड पे आया, आइडिया आया कि अगर बर्ड्स ऐसे उड़ सकती है तो हम ऐसे क्यों नहीं उड़ सकते हैं, और दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द एरोप्लेन. क्लासीफाई द मैन मेड एंड द नेचुरल थिंग्स. मैन मेड थिंग्स मतलब वो थिंग्स जो इंसान ने बनाई है और आकाश में उड़ सकती है, और नेचुरल थिंग्स दैट इज मेड बाय द गॉड, दैट इज द बर्ड दैट कैन फ्लाई इन द स्काई विच इज नेचुरल. बाकी एरोप्लेन, बलून्स एंड काइट्स आर ऑल मैन मेड थिंग्स विच कैन फ्लाई इन द स्काई. Now moving on to page number 59 is another activity, which is activity 2. Now here you can see again few pictures are there. Now these are the pictures of the adventure sport. ये जो adventure sport which has become very much in trend nowadays, and there are special areas where such adventure sports are being played also. बहुत सारे resorts भी होते हैं जो adventure sport को promote करते हैं. तो इनमें से कुछ sports जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं. Adventurous sports require courage and determination. Name these sports activities. Now adventurous sports जो होते हैं मतलब कि ऐसे sports जिसमें कुछ ऐसा थोड़ा खतरा होता है, थोड़ा समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन दैट यू आर गोइंग टू डू. इसमें बहुत बार ऐसा होता भी है कि आपको चोट लग सकती है, आप ऊपर से नीचे गिर सकते हैं, कोई ऐसा इवन कुछ चीज़ें ऐसी होती, लेकिन वो आपको शायद एक अलग ही मज़ा देती. द लेवल ऑफ एन्जॉयमेंट यू हैव इज़ टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड. वो टोटली अलग चीज़ होती है. तो यहाँ पे जो 4 पिक्चर्स दिए हुए हैं इनको हमको आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं. दिस इज़ योर बंजी जंपिंग. बहुत हाइट से आपके पैर में ऐसे एक जो है ये बांधा जाता है और ऊपर से फिर आप जंप करते हैं इनटू द, आप नीचे की तरफ जंप करते हैं. दैट इज़ योर बंजी जंपिंग. दिस इज़ योर पैराग्लाइडिंग. बहुत कुछ बर्ड के जैसे ही होता है. इसके अंदर आपको यहाँ पे बिल्कुल द विंग्स ऑफ दिस glider are like that of the bird. So this is your paragliding. This is your parachute jumping. आप पैराशूट पहन के जो है हेलीकॉप्टर में से जंप करते हैं, एंड आफ्टर सर्टन लेवल यू गेट डाउन, ऑटोमेटिकली द पैराशूट्स ओपन्स. तो ये पैराशूट जंपिंग है. एंड दिस इज द रोप वॉकिंग. मतलब रस्सी के ऊपर बहुत ऊंचाई पर कोई भी 2 डिस्टेंस के बीच में रस्सी के ऊपर चलना. दिस इज योर रोप वॉकिंग. तो इस तरीके से ये 4 एडवेंचर स्पोर्ट्स की तस्वीरें या पिक्चर्स यहाँ पर दी गई हैं. नाउ थर्ड इज योर एक्टिविटी 3. दिस इज अबाउट अ काइट. There's a small poem which is written about a kite. And what is the name of the poem? The poem titled is The Brave Little Kite. The title of the poem is The Brave Little Kite. Now here you can see there's a little kite with lovely eyes. पर लेकिन इसकी आंखें देखकर हमको ऐसा लगता है कि इट इज़ क्वाइट कन्फ्यूज्ड. तो ये
काइट जो है कंफ्यूज्ड क्यों है, ऐसी दुखी सी क्यों है, हम इसको पढ़ेंगे और हमको पता लगेगा. यू ऑल विल सिंग दिस पोएम. Sing this poem. I never can do it, the little kite said, as he looked at the others high over his head. I know I should fall if I tried to fly. Try, said the big kite, only try. Or I fear you will never learn at all. But the little kite said, I'm afraid I will fall. The big kite nodded, ah, well, goodbye. I am off, and he rose towards the tranquil sky. Then the little kite's paper stirred at the sight, and trembling beshook himself free for flight. Now there's a little kite who is afraid to fly in the sky. So this little kite is saying that I can never fly. I will not be able to fly. As he looked at the others high over his head. That means as he looked over the other kites which were flying high in the sky. The little kite said, if I try, I know I should fall if I try to fly. अगर मैं उड़ने की कोशिश करूँगी तो मैं गिर जाऊँगी, ऐसा काइट सोचती है. और लेकिन एक बड़ी काइट जो है उसको बोलती है कि ट्राई करो, वंस यू हैव टू ट्राई ओनली. विदाउट ट्राइंग हाउ विल यू कम टू नो दैट वेदर यू कैन फ्लाई और नॉट. जस्ट अ ट्राई you have to give. If you will be afraid of flying like this, then you will never learn how to fly. But the little kite says that I'm afraid that I will fall. उसको गिरने का डर है little kite को, इसलिए वो उड़ना नहीं चाहती. The big kite then said, nodded मतलब उसने अपना सिर हिलाया और कहा, aha, well, goodbye. That means the big kite is ready to fly high up in the sky. I am off and rose towards the tranquil sky. मतलब वो जो है वो स्काई में ऊपर की तरफ जो है वो उड़ने लगी बड़ी काइट. Then the little kite paper stirred at the side. मतलब कि वो काइट जो है, छोटी काइट जो है, नीचे से वो देख रही थी कि कैसे वो बड़ी काइट उड़ रही है. और फिर उसने धीमे से अपना जो है सर झुकाकर एक नोट दिया. हवा में उड़ने के लिए वो अपना उसने मन बनाया. Now the second part of it on page number 60. First whirling and frightened, then braver grown, up he rose through the air alone, till the big kite looking down could see, then little one rising steadily. जब पहले उसने हवा में उड़ना चालू किया तो whirling and frightened मतलब गोल गोल घूमती थी और उसको डर लगता था. और धीमे धीमे उसमें हिम्मत, ब्रेवर ग्रोन मतलब धीमे धीमे हिम्मत आने लगी और धीरे धीरे वो आकाश में अकेले अकेले ऊपर की तरफ उड़ने लगी. टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी मतलब कि वो बड़ी काइट ऊपर से नीचे देखने लगी. एंड द लिटिल वन राइजिंग स्टेडली और जो छोटी काइट थी जिसने अभी उड़ना सीखा था धीमे धीमे, वो धीमे धीमे ऊपर की तरफ आकाश में उड़ने लगी. Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side, while far below he could see the ground and the boys like small spots moving around. और जैसे जैसे जो हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड मतलब कि लिटिल काइट को बहुत ही अपने ऊपर प्राइड फील हुआ और एक बहुत थ्रिल थी. इट वॉज इंथुजियास्टिक कि मतलब एक एक्साइटमेंट था उसके अंदर कि देखो उसने उड़ना सीख लिया है. एज वो और हवा में किसके साथ, वो साइड बाय साइड थी, बड़ी काइट के साथ साथ वो छोटी काइट भी अब हवा में उड़ने लगी. और जब उसने नीचे ऊपर से नीचे देखा तो उसको ज़मीन दिखाई दे रही थी और छोटे जो बच्चे थे जो पतंग उड़ा रहे थे वो उसको छोटे छोटे स्पॉट्स जैसे इधर उधर घूमते दिखाई दे रहे थे. They rested high in the quiet air, and the only birds in clouds were there. Oh, how happy I am, the little kite cried, and all because I was brave and I tried. Now the little kite was very happy, and they rested high, quiet in the sky. मतलब कि ऊपर जितने ऊपर आकाश में जाती है फिर एक टाइम आता है कि वो अपने आप ही उतने में जो है हवा में सेल करती है वो काइट.
तो काइट जो थी वो सेल कर रही थी और वहाँ पर क्या था ऊपर, ओनली बर्ड्स वर देयर एंड क्लाउड्स वर देयर, नथिंग एल्स वाज देयर इन दैट स्काई, सो दे हैड रीच्ड सच अ हाइट एंड द लिटिल काइट वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड इट क्राइड अलाउड, मतलब लिटिल काइट इतनी खुश होके वो चिल्ला रही थी उसमें कि मैंने उड़ना क्यों सीखा, बिकॉज आई हैव बिकम ब्रेव नाउ, क्योंकि मैं ब्रेव थी और मैंने ट्राई किया इसलिए मैंने उड़ना मैं उड़ सकी. सो डियर चिल्ड्रन, फ्रॉम दिस वी हैव लर्न that if you will try then you will always be able to do that you are not able to do. अगर आप कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं तो ऐसा मत सोचें कि आप नहीं कर सकते. अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप हिम्मत करेंगे उस चीज़ को करने की, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सक्सीड एज द लिटिल काइट हैड डन. तो लिटिल काइट हमको यही लेसन देती है कि कभी भी आप हिम्मत मत हारिए, एटलीस्ट ट्राई करिए और हिम्मत से ट्राई करिए. यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन योर वर्क. आप हिम्मत होगी और अगर इच्छा होगी और आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर आप अपने काम कर सकते हैं. नाउ दीज आर द की वर्ड्स दैट मीन्स दीज आर द वर्ड मीनिंग्स: ट्रैंक्विल, पीसफुल, स्टर्ड, मूव्ड, ट्रेम्बलिंग, शेकिंग, वर्लिंग सर्कुलर मोशन मतलब गोल गोल घूमना, स्टेडी स्मूथली मतलब एक सी स्पीड में, प्राइड अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब खुद के ऊपर आपको मान आता है कि नो आई हैव डन दिस बिकॉज आई कुड डू दिस, जो दैट फीलिंग इज दैट इज द फीलिंग ऑफ pride. So these hard words you have to write it in your notebook one time. Now who is the poet? The poet of this is Catherine Pyle, जिसने ये पोएम लिखी है और काइट से हमको एक मॉरल भी मिलता है, एक लेसन भी मिलता है. Next is your question answers. Answer the following questions briefly. Why was the little kite scared? The little kite was scared because it thought that it would fall. उसको गिरने का डर था. Why was the little kite thrilled with pride? Little kite क्यों एकदम इतनी excited थी? The little kite was thrilled with pride because he could fly up high up in the sky. What could the little kite see from the sky? The little kite could see the boys like small spots moving around on the ground. Imagine you are a little kite. Tell your story in 4 to 5 sentences. आपको यहाँ पर अगर आप काइट है तो आप क्या सोचते हैं, आप अपनी स्टोरी जो है 4 या 5 सेंटेंसेस में लिखेंगे. I am a little kite. I was scared to fly because I thought I would fall. When I saw the other big kite flying high up in the air, I became a little braver and started to fly. How thrilled and proud I was, only because I was brave and I tried. Now next is your activity 4, which is on page number 61. These are your MCQs. Tick the correct option. Which lines from the poem tells you that the kite was ready for flight? The option A, then the little kite's paper stirred at the sight. The little kite did not want to fly higher as it was afraid that it would fall. The little kite was being encouraged by a big kite. The correct option is answer C. Next is activity number 5. Here you have to find out the rhyming words from the poem. Now certain words I have underlined, as you can see in the poem. The last words I have underlined, all these words are the rhyming words like said, head, fly, try, all, fall, by, sky, sight, flight, grown, alone, then pride, side, ground, round, air, there, and cried and tried. So all these words I have written here. These are all the rhyming words that are there in the poem. Now we move on to page number 62. This is your activity 6 and there is a bubble. You can see there are 2 bubbles are there and this is a bubble conversation between a kite and another. There are 2 kites are there. Here 2 kites. Imagine that these 2 kites are talking with each other. Write a conversation between them. So here this is the green kite and this is the big kite. You have to write a simple conversation that I have written that I am not going to read now. Next is your activity 7 that we are not going to do.
divide the class into groups and make a collage based on the things that can fly, things that live in water and things that live on earth. But dear children, in this you can do a project. You have to draw a kite और उसको आप अच्छे से collage करके आप एक काइट बनाएंगे और एक ऐसी मैनमेड चीज़ बनाएंगे जो दोनों को आप जो है एक काइट और एक मैनमेड चीज़ जो उड़ती है और दोनों को आप कोलाज कर में आप उसको जो है अपने प्रोजेक्ट बुक में बनाएंगे. So this is your project for English. Now one, you have to make a kite and a man-made thing in the collage only, and then you have to paste it in your project book, or directly you can draw and do it in your project book. Now next is your activity 8. There's another poem about a little bird. Now let's read the poem. First we'll read the title of the poem. What does the little birdie say? अभी जो एक काइट थी दैट वाज अ मैन मेड थिंग दैट कुड फ्लाई इन द एयर. अब ये जो दूसरी चीज़ है, दिस इज द पोएम अबाउट अ बर्ड विच इज़ अ नेचुरल थिंग, जो आकाश में उड़ सकती है. What does the little birdie say in her nest at peep of day? Let me fly, says little birdie, mother, let me fly away. Birdie rests a little longer till the little wings are stronger. So she rests a little longer, then she flies away. Now, this is a poem about a bird. There's a little bird in the nest who always peeps out at the day. मतलब जैसे ही दिन निकलता है तो अपने नेस्ट में से झांकती है और वो जो है अपनी मदर बर्ड को बोलती है कि लेट मी फ्लाई. मतलब वो कहती है कि मुझे भी उड़ना है और मुझे उड़ने दो. तो मदर बर्ड क्या बोलती है कि थोड़े दिन और आराम करो, जब थोड़े से विंग्स और बड़े हो जाएंगे और स्ट्रांग हो जाएंगे तब उड़ना, तब तक जो है इसके नेस्ट के अंदर आराम करो और फिर उड़ के चले जाना. पेज नंबर 63. What does the little baby say in her bed at the peep of a day? Baby says like little birdie, let me rise and fly away. Baby sleep a little longer till the limbs are stronger. If she sleeps a little longer, baby too shall fly away. Alfred Tennyson is the poet. Now here after this little birdie, मतलब कि यहाँ पर जो पोएम में डिस्क्राइब किया हुआ है वो एक बर्ड है, बेबी बर्ड के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है. और वैसे ही यहाँ पर जो है लिटिल बेबी के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है कि बेबी जब सुबह उठते हैं तो क्या बोलती है कि लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे. जैसे लिटिल बर्डी बोलती है वैसे ये छोटा बेबी भी बोलता है कि मुझे भी चलने दो. और बेबी को उसकी मम्मी क्या बोलती है कि थोड़े दिनों बाद थोड़ा देर और भी सो लो, आराम कर लो, जब लिम्स जो है हाथ पैर और स्ट्रांग हो जाएंगे तो आप जो है चलना और उड़ जाना. जैसे कि बर्ड उड़ गया वैसे आप भी चलने लगना. सो दिस इज द पोएम ऑफ अ बेबी एंड बर्डी. और यहाँ पर जो है कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें आपको लिखना है आप किससे रिलेट करते हैं. रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड रिलेट देम टू whom it is connected. राइट बर्डी, बेबी और बोथ इन द ब्लैंक्स. आप बेबी है तो बेबी लिख सकते हैं, बर्डी है तो बर्डी लिख सकते हैं और दोनों ही लिख सकते हैं. She is in the bed, that is baby. Her wings are not strong still, birdie. She sleeps for some times, it is baby. She tells her mother at the day's break, both baby and birdie दोनों ही बोलते हैं. Mother wants her to be stronger, both दोनों की मम्मी जो है ऐसा बोलती है कि बेबी की मम्मी बोलती है कि लिम्स यानी कि हाथ पैर स्ट्रॉन्ग करने दो और बर्ड की मम्मी बोलती है कि विंग्स को स्ट्रॉन्ग होने दो. Next is activity number 9. Now this activity number 9 we are not going to do, so we move on to page number 64. This is your activity number 10 and there's a short paragraph that you have to write on the kite flying festival that has just gone by, just 2 or 3 days ago. So
Look at the pictures below and write a short paragraph describing the celebrations of the kite festival. ये जो kite festival है उसके बारे में आपको एक paragraph लिखना है. About 10 sentences you have to write. So I have written the entire 10 sentences over here. You can see this. And you can make any necessary changes whatever you like to make, क्योंकि ये 10 सेंटेंसेस मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं. आपको कोई भी चेंजेस करने हैं इससे रिलेटेड आप कर सकते हैं. यू कैन राइट योर ओन एक्सपीरियंस ऑफ काइट फ्लाइंग जो कि अभी आपने किया है. यू कैन ऐड समथिंग, यू कैन डिलीट समथिंग. So I'll just read it out. The above picture shows the festival of Uttarayan. It is celebrated as the Kite Flying Day in Gujarat. Even international kite flying competition is also held here. You can see the kites of many different shapes, size and colors, designs you can imagine. From the morning, people are seen on the terraces whole day. They enjoy kite flying with their friends and relatives and with music in the air and the loud cry of Kai Po Che. People eat untiu and jalebi, til papri, berries, sugarcane, etc. Also, at night, the sky is full of colorful crackers and lanterns in the sky. Every year, people wait anxiously for this day. There's a lot of fun. So I have written this. If you want to add something, you can add on your own. आपको और कुछ add करना है कर सकते हैं. ये देखिए एक lovely picture of an Uttarayan. You can see this. और इसको अब शायद मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आपने रिसेंटली उसको एक्सपीरियंस किया है तो द मेमोरीज आर फ्रेश इन योर माइंड. सो यू कैन jot down your own points and write it. So dear children, this is explanation part in the textbook is over. Now there are certain hard words are not there in this lesson, so you have to write. First of all, what you have to do in the notebook, I'll tell you that these question answers are there. All these question answers you have to write it in your notebook. Then this rhyming words activity 5 also you have to write it in notebook. Activity 4 also you have to write it in the notebook. Along with that is your keywords, that means your word meanings also you have to write it in your notebook. आपको notebook के अंदर जो है keywords लिखने हैं. फिर ये जो question answers है classify and question number 1 and 2, this also you have to write it in your notebook one time. The 3 MCQs that are already there in the textbook, which is on page number 61. Along with that, there are some other extra MCQs that I have prepared. So those MCQs also you have to write. The big sky rose towards the big kite rose towards the tranquil sky. The little kite shook himself free for flight. The little kite grew braver. The little kite was thrilled with pride. There was only dash in the sky, that is your birds and the clouds. The little kite was happy because he was brave and he tried. So all the 6 MCQs along with those 3 also you have to write this in your notebook one time. So dear children, there's a lot to write in the notebook. MCQs, question answers, starting from page number 58, 2 question answers are there. Then all page number 60, there are 4 question answers. Then टिक द करेक्ट ऑप्शंस एंड दिस राइमिंग वर्ड्स. ये सारा आपको जो है नोटबुक में लिखना है. और ये जो प्रोजेक्ट दिया हुआ है कोलाज से काइट और एक मैन मेड ऑब्जेक्ट बनाना है, ये भी आपको नोटबुक में लिखना है. और ये प्रोजेक्ट बुक में करना है. उसके बाद दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक. ये एक्टिविटी 8 जो सेकेंड पोएम के साथ रिलेटेड है, दिस एक्टिविटी यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक. और ये जो एक्टिविटी 10 है ये आपको जो है खाली टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है. सो डियर चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ यूनिट 7. Till we meet on the next turn with a new topic, new lesson and a new fresh start. Till then, bye bye and have a nice day. Bye.